चलो भाई जान, अंदर तो पहुंच गए हम। अब ये दोबारा आ गए। ये एक बगैर बहुत फुर्तीला समझ रहा होता अपने आप को। इसका हिसाब लगाते हैं। चलो इसकी ऐसी की तैसी करें। ओहो, बराबर लड़ता है आगे से। अबे यार, इसका माँ का भोला चेहरा। तो गरम कर करके मार रहा है अब। अच्छा अच्छा, इस सूट में कॉम्बो, अच्छा नहीं वो भी हो रहा है। चलो आई गेस अब क्या है? और भेज दी। ये बड़े वाले को सबसे पहले मारूंगा मैं। ये तो आसानी से गया। अबे इसका भाई। चलो वो तो गया एटलीस्ट। चलो व्हाट्स नेक्स्ट? आई गेस यहीं पे जाना है मुझे। है ये क्या हुआ? इसको तो नहीं बचाना, फिर ये आगे से कोई रास्ता बताएगा ना। नोप, ये रास्ता होगा। हाँ एक और दरवाजा बंद है, ऐसे भी ठंडा करना गर्म करना होगा। नहीं नहीं नहीं, इवेंट। अबे फ्रीज के बच्चे ने सारा कुछ जमा दिया भाई। अच्छा वैसे देखा जाए ना, ये कोल्ड हार्ड जो है ना, बैटमैन आर्कम सिटी का जो डीएलसी था, हार्ली क्विन्स रिवेंज, उससे तो काफ़ी अच्छा है। पर हम इस गेम को लोग मतलब इसके बिस्त करते हैं भाई जान, इस गेम में इनोवेशन नहीं है, ये नहीं है। क्या करते होगा ऐसा होता। ओके, सूट तो गरा ठंडा ये भी हो रहा है। डीएक्टिवेट टू स्विचेस टू स्टॉप सिक्योरिटी लॉकडाउन। अब ये स्विचेस किधर है? फायदा क्या सूट का, जम तो ये भी रहा है। अच्छा एंकर ही है रे। अच्छा
वहाँ पे भी लगाए थे, यहाँ भी लगाए थे। अच्छा वो बगैरत के बंदे तैयार खड़े हैं। आइए मुझे यहाँ से नीचे से जाऊँगा ना तो बेहतर रहेगा। अभी तो नज़र तो कुछ आ ही नहीं रहा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अबे अबे क्या हो रहा है? Where am I going? I need to disable those 2 power conduits to stop that reactor leak. Then I need to ventilate the room of cryo vapor. ये भी चल भी नहीं रहा है। ये तार जा किधर रही है? एक तार इधर जा रही है, इसके अंदर। ओह अच्छा, इसके अंदर तो नहीं आना था कहीं। हाँ सही हो गया। चलो बंद हो गया। अब इसे भी अब बंद करना अब होगा। यप, दैट्स व्हाट इट इज। चलो वेंटिलेशन ओपन हो गई, ओपन हो गई। इसको बचा लें। एक तो यार उनका अबे मेरा आर्मर ख़राब हो गया पूरा। चलो वही कुछ 4 रहते हैं। ये वाला तोड़ा है ना पहले, 2 इकट्ठे।
अबे रुक जा। गया फाइनली। चल तू तो बाहर आ। अच्छा जी। Maybe this freeze guy's a better bet for us. Keep talking like that. I'm gonna kick your ass. Come on. Whatever it is, I didn't do it. चलो ये भी गया। ये क्या इशारा है? अच्छा समझ गया मैं। और ये इसमें तो करंट तो अब लगेगी ही नहीं ना, क्योंकि अब वो है ही नहीं मेरे पास शॉक ग्लव्स। I'll need to evacuate this lab of cryovapor before the lockdown protocol on this door is disengaged. चलो यहाँ की वेंटिलेशन भी ऑन हो गई। यहाँ जाना है मुझे। यप। There's more going on here than a simple accident. This security guard's skin has the same blue coloration as Freeze's. I should set up a crime scene. करो करो सेटअप क्राइम सीन। Data analysis indicates that he died from heat stroke, but the control room doesn't show signs of overheating. अच्छा This is some kind of crystallized chemical residue. Traces lead back into the lab. वाह। The trail ends here. I should scan for more evidence. Two men struggled. One of them ran out of the lab. That would be the dead security guard I found. अच्छा ये क्या हो रहा है? These palm prints are a match for Victor Freeze. He must have watched the security guard die. Freeze scavenged what he needed from various prototypes to build himself a super-cooled survival suit. वाह। Extreme pressure built up inside the tank when ice sealed these outtakes. It appears that this guard was frozen by the cryovapors from the resulting explosion. The evidence suggests the guard was frozen before the tank ruptured, perhaps by Freeze's cryocannon. These DNA traces are a match for Victor Freeze. Spatter analysis suggests a blunt impact,
Someone assaulted Freeze with a weapon. The cannon was knocked over and fired. When the tank exploded, it released a plume of cryochemicals. The plume enveloped Freeze and the guard, but the shockwave knocked the assailant clear. I need to find that weapon. It may have evidence I can use to identify the assailant. वेपन कौन सा, ये वाला? हाँ ये रहा. DNA analysis confirms the gun was used to bludgeon Victor Freeze, and fingerprint analysis shows Ferris Boyle. It was Ferris. अच्छा. Something was wheeled through this fluid, possibly a gurney. The fluid must have frozen almost immediately for these tracks to have been preserved. अच्छा. Odd. Freeze was secretly doing research on Huntington's Korea, but this is a cryogenic weapons lab. The test subject was Nora Freeze. Now I know what happened here. Boyle hired Victor to help advance the secret cryoweapons program within GothCorp. In exchange, Boyle agreed to devote GothCorp resources to finding a cure for Nora's Huntington's. But Boyle was more interested in how Victor had managed to put Nora into cryostasis. When Victor realized that Boyle had no intention of following through on their deal, he decided to do the Huntington's research himself. But Boyle didn't like that. The cryochemical cocktail altered Victor's metabolism, as well as the guards. Boyle escaped ahead of the plume and had the lab quarantined. Victor survived, but he knew that leaving the supercooled lab would kill him. So he built himself a suit and utilized an organic supercoolant to keep his core temperature sub-zero. All this violence. He's just trying to save his dying wife. The supercoolant Victor uses in his suit is the same fluid I need for the cryo drill. ओके हो गया भाई, सारा समझ गया मैं. अल्फ्रेड से बात नहीं करेगा. अब किधर जाना है मुझे? ठहरो जरा. वो भी चीज, वो क्या थी? इसका आई गेस मुझे वापस ही जाना पड़ेगा. और मे बी Send Gordon the evidence I've gathered on Boyle's crimes. I'm sorry, Master Bruce. I know you had high hopes for what Ferris could do for Gotham. That doesn't matter now. Victor's plan was never to kill Boyle. He needs Boyle's security access to get his wife out of GothCorp. That's all he wants. And now, you're going to stop him? I have to. And are you still going to need that gurney? I am. But not for Victor. You know what I'm gonna do when I get out of here? I'm gonna have Caddy pour me a nice hot, and then I'm gonna drown you in it. I'm trying, boss. पहले ठंड क्या नाम है जला जला के मार रहा था नहीं शॉक लगवा लगा के मार रहा था और अब जला जला के मार रहा है.
चलो पेंगुइन को तो बाहर निकालें। क्या मैं निकाल सकता पेंगुइन को बाहर? यस ऑफ कोर्स आई थिंक। You're gonna get me honest, damn iceberg. You're good right where you are. नहीं निकाल। But you can't leave me here. I'll freeze to death. Not my problem. Oh, so you come back to glow, have you? Oh, I'll hang you with that bloody cape. You hear me? Let's be reasonable. You're not gonna let me die here now, are you? अच्छा Are you? अब मैंने जाना किधर है? ये क्या चीज़ बता रहा है? यूज़ क्रायो ड्रिल। You're a cold-hearted bastard, you know that? ओह Come on, madman. Believe got the place, yeah? Hey, it's yours. Holy. चल एप्रीहेंड मिस्टर फ्रीज। लगता है अब उससे फड्डा होने लग गया मेरा, होने वाला है। अब देखते हैं, आर्कम सिटी में तो पूरा स्टेल्थ बैटल था मिस्टर फ्रीज से, बट लेट्स सी इसमें क्या होता है। Giving you the code. I'll see you both dead before I give you a damn thing. Victor, you have to let him go. I'm taking my wife. You can't stop me. I know the truth, and so will the police. Boyle will face judgment for his crimes. It was an accident. You don't know what you're talking about. अबे मान जा। Nothing matters. Do you understand? Nothing but my Nora. You've endangered lives all over this city. Nora would never have wanted this. No. What she wants is to live a long life in the warmth of the sun. Her hand in mine. Because of him, she'll only feel the icy touch of a man whose emotions run as cold as the blood in his veins. Where are the rest of you? Get in here and honor our bargain. ये कैसा बैटल होने वाला है? वो ऊपर है। So you need to find the control panels for those cryogenerators and disable them. My wife will have अच्छा enough you वो कह रहा 3 जनरेटर्स ढूंढो। will stop me from finding it. In the open. ओए ओए ये 3 जो हेंचमैन आ गए हैं ना। अच्छा क्रायो जनरेटर वो तो नहीं है कुछ? यार इसने गधे ने देख लिया मुझे, फिर भी जलाने की कोशिश करते हैं। हो गया। अबे अबे ये क्या है? अच्छा एक बंद हो गया। This is how you want it to be, so be it. थर्मोचार्ज बैटर रैंक। अच्छा खैर हमको तो कुछ और ढूंढना है। There's no need for this background. I got him. ऐसे है तो ऐसे ही सही। Help me kill him.
अबे मर गया। लो भाई दूसरा जनरेटर भी बंद हो गया। यार इनकी ऐसी की तैसी, बहुत हो गया, बहुत गोलियां चला ली तुम लोगों ने मुझ पे। यार मिस्टर फ्रीज के बच्चे ने बचा लिए। ओके How did we escape? What do you see? ओके 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 ओके। यार इसके गधे के बच्चे की। मैं गया मैं गया मैं गया। चलो लास्ट जनरेटर। Containment breach. Cryotake 1. ओके Let's see how well you do when the air freezes in your lungs. ये क्या किया उसने? हो बिल्कुल ठंडा कर दिया। अच्छा अब वो बैटल ना ज़मीन पे होने लग गया है, लेकिन अभी उन लोगों ने उसने और बुला लिए हैं। अच्छा इसका नाम मैं पीछे से उड़ाता हूँ। That room is filled with ice formations, Master Bruce. I suggest you use them to your advantage. Try different takedowns on Mr. Freeze through ice walls and vents and tight ropes। अब ये तो वही बात हो गई हो आर्कम सिटी वाली। यार ये थोड़ा अजीब है। अब मैं थोड़ा भी कहूँगा कि ये चवल है। यार एक तो वेंट इन लोगों ने इतने ना अंधेरे वाले बनाया, पता ही नहीं लग रहा। आजा आजा आजा।
अच्छा, इन लोगों ने ना एक और चीज़ की है, मैं देख रहा हूँ। लग तो वैसे ही रहा आर्कम सिटी जैसा बैटल पूरा, बट इन लोगों ने थोड़ा मुश्किल कर दी है। मतलब जो बराबर बंदे दे दिए ना, हेंचमैन्स। एक पीछे से मारता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, करीब ही नहीं आने दे रहा। अब अगर मैं इसकी गन करूं, होगी इसकी गन? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, लेज टेक डाउन मैं करूं अगर इस पे? अबे ओके। वो मार दिया उसने मुझे। तो हॉस्टाइल्स। मिस्टर फ्रीज भी साथ को लग गए। यार इस गधे के बच्चे को मैं उड़ाऊं पहले। आजा आजा आजा, इधर आ। जल्दी आ। कम ऑन। लग गया। My suit is resilient, Batman. You lost your resolve. Mine remains as strong as घंटा तेरा सूट स्ट्रांग है। well, Batman. Come out and do what you came to do. आजा। You want to stop me? Then come out of the shadows. यह किधर है? अच्छा, You lost your resolve. Mine remains as strong as ever. Damn you, Batman, for forcing my hand. आजा Where are you? You will not see. My patience wears thin. आजा 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 आजा। Test my patience. Well, Batman, come out and do what you came to do. किधर जा रहा है? Your resolve. Mine remains as strong as ever. Damn you, Batman, for forcing my hand. You have
अबे और भी कुछ बोल दे। You want to stop me? Then come out of the shadows. Well, Batman, come out and do what you came to do. Your technology is inferior. You not Containment failure in Capsule 1. Prime subject Nora Freeze in danger. How did he escape? Nora! चलो कुछ हुआ तो है, इतनी देर का एक ही कर करके थक गया हूँ मैं। अब क्या है? If I can get underneath him, I can take him from below. Cryogenic If I can, failure. Prime subject Nora Freeze in danger. Hang on, Nora. I've almost got you. अच्छा सही हो गया। पकड़ा गया। Thanks for doing the heavy lifting, Batman. But you shouldn't have stuck your nose in my business. ये वगैरह तो ही बाद में आ रहा है। And here I thought I was going to have a problem explaining what happened in your lab. I mean, the police are never going to look at me after what you did. And with this bat freak dead, there won't be anyone left to say otherwise. Cryogenic containment failing. And that just leaves you. Please. You can save her. You just have to bypass the cryo. Victor! She's done! But I'll keep you alive long enough to see her go! Go! अच्छा वो उसका मार के उसकी हेल्थ और कम कर रहा है। Take a seat, humanitarian. वाह Cryogenic containment restored. I'm sorry, Victor. I can't give you peace, but I can give you justice. ये क्या किया उसने? ये क्या हुआ है? कुत्ता। अबे वो तो मुझे पता है, बैटमैन क्रिएटेड बाय बॉब केन। उस Breaking news out of North Gotham at this hour, where protest has turned to celebration. Under extreme pressure from Gotham's citizens, Mayor Hill has just announced his resignation. While Hill has not ruled out a possible run for re-election in the new year, his resignation means that Peter Grogan will likely not be the next police commissioner of Gotham. Speculation has already begun about who the new mayor will appoint as commissioner, with many pundits naming GCPD Captain James Gordon as the frontrunner. Now to South Gotham, where Vicky Vale brings us this live report. Thanks, Denise. I'm standing at the corporate headquarters of GothCorp, where Captain Gordon has confirmed that GothCorp CEO Ferris Boyle has been taken into police custody. Police report that Mr. Boyle stands accused of manslaughter, extortion, and attempted murder. Shocking accusations given that just earlier tonight, he accepted the Wayne Foundation's award for Humanitarian of the Year. Also in custody is the notoriously elusive underworld crime boss Oswald Cobblepot, better known as the Penguin, as well as a GothCorp cryogenicist, Victor Freeze. Mr. Freeze is being held under heavy guard at Gotham General, receiving treatment for an undisclosed medical condition. Quincy Sharp has suggested that Mr. Freeze is yet another example of the type of criminal that needs the specialized care that only Arkham Asylum can provide. Police credit these arrests to solid police work, but this
press reporter suspects the vigilante known as the Batman had more than a small role to play. On a personal note, I owe Batman a debt of gratitude for rescuing me from almost certain death earlier this evening. So, thank you, Batman. For all of us. Back to you, Janine. Thanks, Vicky. The Batman continues to be one of the top stories this holiday season. So as we here at GNN wish you all a happy and safe New Year's Eve, we'll leave you with just a few of the comments you've made about Gotham's caped crusader. I was surrounded. Next thing you know, bam, boom, kapow! The bastards are all on the ground, KO'd. I didn't even see it coming. Oh, it was all a blur. Just whooshed in out of nowhere. Listen, I'm a cop. I can't condone what he does. I can be grateful he's doing it. Oh, he's real, all right. I got the bruises to prove it. He's real, he's ruthless, and there ain't nothing in the world that's gonna stop him. Okay, so that was it. हुआ कुछ ऐसा है कि उन लोगों ने फेरिस बॉयल को भी अंदर कर दिया है, उसके अलावा पेंगुइन को भी, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसका नाम, मिस्टर फ्रीज को जो उसने वो ठोका था, वो उसकी ना अंदर से ठंड ख़त्म हो रही थी, ठंड रिस्टोर करने के लिए उसने बैटमैन ने कुछ ठोका था, तो वो जिंदा हो गया वापस, और उस आर्कम असाइलम भेज दिया क्विंसी शार्प मेयर ने। तो ये था सारा कुछ, अच्छा गेम प्ले था सारा इसका, बट मुझे एंड में बस चवल लगी है जो इन लोगों ने मिस्टर फ्रीज वाला पूरा बैटल आर्कम सिटी से उठा के बस कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की ना, और साथ साथ अगर कॉपी पेस्ट करते तो अच्छी तरीके से तो करते। वो मिस्टर फ्रीज कुछ सीखता ही नहीं अपने वो ऊपर जो टैग पड़े, उसे बस एक ही टैग बार बार मारता जाए, वो खाता जाएगा। अबे एक क्यों बज रहा है, मतलब एक ही टैग बार बार खाता जाएगा वो। है एनीवेज, ये लास्ट गेम प्ले था बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स के कोल्ड हार्ट का। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि डिफरेंट होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड वल्लाह अंता खल्ली वल्ली।